मन से मन का मेल जो हो तो रंग से मिल जाए रंग होली के रघुवीरा होरी खेले रघुवीरा अवध में होरी हो आज बिजली है होली बंसिया इतने आए हैं कोमल बंसिया हो आज बिजली है होली बंसिया इतने आए हैं कोमल बंसिया आज है दोनों रे दोनों राधा को बुलाने आए किशन वो तेरी भूख नशे में अजर हो बरसिया भीगी चुनर मोर पिंग मोरी अंगिया हो आए फागुन आए रे मोरे कान्हा जो आए पलक के अपनी होली में खेलूंगी जग के ओ मोरे कान्हा जो आए पलक के अपनी होली में खेलूंगी जग के रघुवीरा होरी खेले रघुवीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा अरे होरी खेले रघुवीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा होरी खेले रघुवीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा हिल मिल आवे लोग लुगाई हिल मिल आवे लोग लुगाई हिल मिल आवे लोग लुगाई भाई महाराज में धीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा अरे होरी खेले रघुवीरा अवध में होरी गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल चुनरी पे डारे अमीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा अरे चुनरी पे डारे अमीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा अरे होरी खेले रघुवीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा हिल मिल आवे लोग लुगाई भाई महलन में वीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा
खेलब ना खेलब तोरी शपथ मैं उमरिया की थोरी हाय 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 चाचा देखे है ऊपर से झाके नहीं अंदर सजनिया देखे है ऊपर से झाके नहीं अंदर सजनिया उम्र चढ़ी है दिल तो जवा है उम्र चढ़ी है भैया दिल तो जवा है बाहों में भर के मुझे आयो रे आयो रंगों की बहार लायो आयो कान्हा आयो पिचकारी चाले धम धड़ाक धम ढोल बाजे छुम छन घुंघरू बोले खनक खनक खन कंगना डोले छुम छन खनक खनक खन खनक खनक खन धम धड़ाक धड़ाक धा धम धड़ाक धड़ाक धा धम धड़ाक धड़ाक धा हो आज ब्रिज में है होरी रसिया इतने आए हैं कुंवर कन्हैया हो आज ब्रिज में है होरी रसिया इतने आए हैं कुंवर कन्हैया आज हैं दोनों रे दोनों मगन राधा को अपनाने आए किशन हो रंग रंग दे रंग रंग दे रंग रंग दे रंग हो रंग रंग दे रंग रंग दे रंग रंग दे रंग हो रंग रंग दे रंग रंग दे रंग रंग दे रंग ओ तेरी भंग के नशे में आज रंग रसिया भीग चुनर मोरी भीगी मोरी अंगिया हो आयो रे फागुन आयो रे मोरे कान्हा जो आयो पलट के अब के होरी में खेलूंगी डट के ओ मोरे कान्हा जो आयो पलट के अब के होरी में खेलूंगी डट के हो रंग रंग दे रंग रंग दे रंग रंग दे रंग हो रंग रंग दे रंग रंग दे रंग रंग दे रंग बंसी की धुन पे टोलियां थम गई अपने प्रीतम से गोपियों की ठन गई हो अबीर की बरखा में ऐसा रंग डाला सांवरी सी राधा सांवरे लाला
Hello everyone, my name is Priyanshi. Today I am going to tell about Holi festival. Holi is celebrated in spring season. Holi is the festival of color. I play Holi with my family and my friends and with my old sisters and cousins. And Holi means good over bad. We worship Holika. रंग बरसे हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे
one of the most popular festival of India. Holi is called the festival of colors. This festival is celebrated on full moon day in the month of Falgun according to the Hindu calendar. Holi is 2 days ancient Hindu religion festival. The first day is known as Holika Dan or Choti Holi. On this day, Lord Vishnu saved his great devoted Prahlad from Holika and Hiranyakashipu. People burn the effigy of Holika or their old belongings in the fire and celebrate Holi with singing and dancing around it on this day with great enthusiasm. मेरा नाम मुस्कान माथुर है। मैं 11th क्लास से हूँ और मैं आज बनाने जा रही हूँ ऑर्गेनिक कलर, जिसमें अरारोट वाटर और फूड कलर यूज़ आएगा। और अब मैं चालू कर रही हूँ। प्रणाम, मैं देवांश शर्मा कक्षा 5 का छात्र आपके समक्ष होली के अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रंगों का त्योहार है होली, खुशियों की बौछार है होली। लाल गुलाबी पीले देखो, रंग सभी रंगीले देखो। पिचकारी भर भर ले आते, एक दूजे पर सभी चलाते। होली पर अब ऐसा हाल, हर चेहरे पर है गुलाल। आओ यारो इसी बहाने, दुश्मनों को भी चलो। Morning everyone, my name is Aisha, studying in grade 2 of SRN International School. Today I am going to tell something about Holi. Holi is the festival of colors. It is celebrated in the month of March every year. This auspicious day is celebrated during spring season with great joy and fervor. People play with organic color like red, green, yellow, etc. Various kinds of sweet such as gujia and malpuas are prepared to mark the occasion of Holi. Children love playing with color like pichkari, bucket, balloon filled with colored. Holi is the festival which reminds us of victory of good over evil. Thank you for listening me and have a great day ahead.
am here to speak a few words on my favorite festival of all, Holi. India has a very rich tradition and this is marked by different festivals throughout the year. Festivals are the essence of India and an integral part of its vivid culture. Holi, which is just around the corner, is one of the very important festivals and it is observed very grandly. It is one of the most awaited festivals too, as it has a very playful and joyous approach. All people of all religions and castes are found to enjoy the ambience of the season. Holi is one of my favorite festivals. We all know that the Holi is a festival of colors and we all enjoy it by pouring water on each other and throwing colors and using water guns to throw water. We also enjoy various cuisines such as gujia and many other cuisines. The gujia is the main dish of this festival. It is the most entertaining festival of our country and it is also so much joyful. Sanjana Upala of grade 8th ACERS and today I am going to talk about the festival Holi. Holi is a festival of colors. It is a festival which everyone likes and favorite to almost all the children. It is a festival about celebrating happiness, joy, fun with friends and family. Holi is celebrated with wholesome enthusiasm. It is celebrated in the month of March and is also known as the Spring Festival. Thank you. Do you think we can celebrate Holi this year? Yes, we can celebrate Holi this year but in a different way. Oh yes, we can celebrate it by making rangoli and enjoying homemade snacks. Yes. Do you know why Holi is celebrated? I do, but I don't remember the story clearly. Okay, let me tell you. Holi is celebrated as a festival to mark the victory of good over evil. King Hiranyakashipu was the king of demons and asuras. He earned the boon that he could not be killed by a human or animal, neither by
handheld weapons nor launched weapons, neither in daytime nor at night, neither outdoors nor indoors, neither on air nor water or land. So he became arrogant. He thought that he was God and he demanded everyone to worship him. But his own son Prahlad was the devotee of Lord Vishnu, and Hiranyakashipu did not like that. He tried to punish his son in many ways, but he failed. Holika, the evil aunt of Prahlad, tried to convince him to sit on a pyre with her. I remember it now. Holika was supposed to be immune to fire injuries while Prahlad wasn't. As the fire rose, Holika burned and Prahlad remained safe. Later, Lord Vishnu took the form of Narasimha, who was half lion and half human, which was neither a human nor an animal. At dusk, when it was not day neither night, he took Hiranyakashipu to a doorstep where it was neither indoors nor outdoors. He placed the king on his lap, which was neither air, water nor land, and killed him with his lion claws, which was neither a launched weapon nor a handheld weapon. Yes, right. Can I put some holy on you? Yes. Happy Holi! Happy Holi. Good morning, ma'am. My name is Kanika Kwan. I study in CP Scholar. My topic is Holi. Holi is a festival of colors. It comes in the month of March. Holika Dahan happens before a day of Holi. Holi is played in streets and home with friends and relatives. People rub gulal on faces and wish a happy Holi.